Good morning to all. Welcome to Suresh Gandhi University. लास्ट क्लास में हमने देखा था सब रूटीन क्या होता है, ठीक है, किस तरह से वो वर्क करता है। आज हम लोग देखेंगे सब रूटीन नेस्टिंग एंड द प्रोसेसर स्टैक, ठीक है। A common programming practice called subroutine nesting is to have one subroutine call another. मतलब जैसे हम लोग आप लोग ने सी सी प्रोग्रामिंग के अंदर ये सारा पढ़ा होगा ना, नेस्टिंग लूप, इफ एल्स नेस्टिंग वगैरह। मतलब क्या होता है, इफ के अंदर एल्स और उसके अंदर एक और एल्स, ठीक है। तो वही वाली चीज है, लूप के अंदर लूप इज नेस्टिंग, ठीक है। तो मतलब सब रूटीन के अंदर सब रूटीन एक और सब रूटीन कॉल, तो वो हो गया आपका सब रूटीन नेस्टिंग। क्या हो गया? A common programming practice called subroutine nesting is to have one subroutine call another. In this case, the subroutine address of the second call is also stored in the link register, destroying its previous contents. Hence, it is essential to save the content of the linked register in some other location before calling another subroutine. Otherwise, the return address of the first subroutine will be lost. ठीक है। अब क्या होगा, जैसे हमने दो तीन टर्म्स पढ़ी थी लास्ट क्लास में, सबरूटीन, सबरूटीन कॉलिंग या रिटर्न सबरूटीन, रिटर्न एड्रेस, ठीक है। तो क्या है, जैसे किसी भी प्रोग्राम के अंदर सबरूटीन कॉलिंग हुई, ठीक है। तो वो अपना जो प्रोग्राम काउंटर है, प्रोग्राम काउंटर से जो एड्रेस है जहां पर रिटर्न होना होगा, उसको किसमें, लिंक एड्रेस में स्टोर कर देगा, ठीक है। लिंक रजिस्टर या लिंक एड्रेस, लिंक रजिस्टर में उस एड्रेस को स्टोर कर देगा, और जो पीसी है उसके अंदर वो एड्रेस आ जाएगा जहाँ पे आपका सब रूटीन स्टोर है। लेकिन अब बात कर रहे हैं हम सब रूटीन नेस्टिंग की। तो सब रूटीन के अंदर सब रूटीन, तो मतलब अब प्रोग्राम काउंटर में वो एड्रेस आना चाहिए जो नेक्स्ट परफॉर्म होना है, जो कि दूसरे सब रूटीन का एड्रेस है। तो अब जो लिंक रजिस्टर के अंदर जो स्टोर्ड है, उसको किसी दूसरे रजिस्टर में स्टोर करके जो पीसी का जो डेटा है उसे लिंक रजिस्टर में स्टोर करेंगे, और जो नेक्स्ट सब रूटीन का जो एड्रेस है उसे किसमें स्टोर कर देंगे, पीसी के अंदर, ठीक है। ये वाला काम होगा। तो subroutine nesting can be carried out in any depth. Eventually, the last subroutine called completes its computations and returns to the subroutine that called it. ठीक है। लास्ट सबरूटीन का वर्क कंप्लीट करके जिस भी सबरूटीन ने उस लास्ट सबरूटीन को कॉल किया था वो वहां पहुंच जाएगा, क्योंकि लास्ट इट वाज एग्जीक्यूटेड, ठीक है। द रिटर्न एड्रेस नीडेड फॉर दिस फर्स्ट रिटर्न इज द लास्ट वन जनरेटेड इन द नेस्टेड कॉल सीक्वेंस। हम्म, ओके। That is, return addresses are generated and used in a last in first out order. Okay. This suggests that the return addresses associated with subroutine calls should be pushed into a stack. A particular register is designated as the stack pointer. Stack pointer to be used in this operation. The stack pointer points to a stack called the processor stack. ठीक है, आ गया होगा सभी को ये चीज समझ में। The call instruction pushes the contents of the program counter onto the processor stack and the loads the subroutine address into the program counter. The return instruction pops the return address from the processor stack into the PC. ठीक है, वही सारा वर्किंग है। सिर्फ इसमें एक नई चीज आ गई है, स्टैक रजिस्टर। तो स्टैक पॉइंटर या प्रोसेसर स्टैक क्यों आ गई है, क्योंकि इसके अंदर हमें सब रूटीन, वेरियस वेरियस सब रूटीन्स के एड्रेसेस को स्टोर करना था, ठीक है। अब नेक्स्ट है पैरामीटर पासिंग। नाउ व्हाट इज पैरामीटर पासिंग? When calling a subroutine, a program must provide to the subroutine the parameters, that is the operands or their addresses.
to be used in the computation. Later, the subroutine returns other parameters, in this case, the results of the computation. This exchange of information between a calling program and a subroutine is referred to as parameter passing. ठीक है, parameter passing may be accomplished in several ways. The parameters may be placed in registers or in memory locations where they can be accessed by the subroutine. Alternatively, the parameters may be placed on the processor stack used for saving the return address. The purpose of the subroutine is to add a list of numbers instead of passing the actual list entries. The calling program passes the address of the first number in the list. This technique is called passing by reference. Okay, the second parameter is passed by value, that is the actual number of entries and is passed to the subroutine. ठीक है, अगर actual value pass की जाएगी जब तो क्या हो गया, pass by value, और अगर उनका एड्रेस भेजा जाता है तो उसे बोला जाता है passing by reference. ठीक है, हो गया आपका पैरामीटर पासिंग. इसके बाद है द स्टैक फ्रेम. इस तरह से स्टैक होगा. नाउ ऑब्जर्व हाउ स्पेस इज यूज्ड इन द स्टैक इन द एग्जाम्पल. During execution of the subroutine, 6 locations at the top of the stack contains address entries that are needed by the subroutine. These locations constitute a private workspace for the subroutine, created at the time the subroutine is entered and freed up when the subroutine returns, control to the calling program. Such space is called a stack frame. यहाँ पर एक सबरूटीन स्टैक फ्रेम गिवन है. सबसे ऊपर अभी इसमें लिखा हुआ है एसपी, मतलब स्टैक पॉइंटर, मतलब प्रेजेंट में स्टैक कहाँ तक फुल है. स्टैक पॉइंटर उस पॉइंट को पॉइंट करता है जहां तक स्टैक फुल होती है. ठीक है, लिख लीजिए, आप बना लीजिए एक बार, फिर इसको डिस्कस करते हैं. फटाफट से बना लो. बना लिया. इसमें क्या है, सबसे ऊपर सेव्ड R1 और सेव्ड R0, ये दो रजिस्टर्स हैं. ठीक है, उसके बाद लोकल वेरिएबल्स,
ठीक है, लोकल वेरिएबल्स हैं 1 2 3। सॉरी। ठीक है, एक फ्रेम पॉइंटर है, रिटर्न एड्रेस, ठीक है। क्या है इस डायग्राम में? This shows an example of a commonly used layout for information in a stack frame. In addition to the stack pointer, it is useful to have another pointer register called the frame pointer for convenient access to the parameters passed to the subroutine and to the local memory variables used by the subroutine. These local variables are only used within the subroutine, so it is appropriate to allocate space for them in the stack frame associated with the subroutine. We assume that 4 parameters are passed to the subroutine, 3 local variables are used within the subroutine, and the registers R0, R1 need to save because they will also be used within the subroutine. अब इस stack में क्या क्या चीजों को स्टोर किया गया है, जो जो चीज है, मतलब कि जैसे कि यहाँ पे लिए गए हैं 2 रजिस्टर्स लिए गए हैं, ठीक है। साथ ही साथ वेरिएबल्स, लोकल वेरिएबल्स लिए गए हैं, 3 लोकल वेरिएबल्स लिए गए हैं। तो ये सारा किसको, कौन कौन से लोकल वेरिएबल्स हैं या कौन से रजिस्टर्स हैं, तो ये वो रजिस्टर या वेरिएबल्स हैं जो कि सिर्फ सबरूटीन में यूज में आने वाले हैं। तो इसलिए उसी सबरूटीन के साथ में यहाँ पर स्टैक के अंदर ब्रेक डाउन कर दिए हैं, ठीक है। The pointer, stack pointer, and frame pointer are manipulated as the stack frame is built, used, and dismantled for a particular of the subroutine. We begin with assuming that stack pointer point to the old top of the stack element before the subroutine is called. ठीक है, the calling program pushes the 4 parameters onto the stack. The call instruction is then executed, resulting in the return address being pushed onto the stack. ठीक है, now stack pointer points to this return address and the first instruction of the subroutine is about to be executed. This is the point at which the frame pointer fp is set to contain the proper memory address. Since frame pointer is usually a general purpose register, it may contain information of use to the calling program. Therefore, its contents are saved by pushing them onto the stack. Since the stack pointer now points to this position, its contents are copied into the frame pointer. Okay. Thus, the first 2 instructions executed in the subroutine are move fp, sp and sp, fp. ठीक है,
आफ्टर दीज इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड बोथ एसपी एंड एफपी मतलब स्टैक पॉइंटर और फ्रेम पॉइंटर पॉइंट टू द सेव्ड फ्रेम पॉइंटर कंटेंट्स. Finally, the contents of processor registers R0 and R1 are saved by pushing them onto the stack. At this point, the stack frame has been set up as shown in the figure. The subroutine now executes its task. When the task is completed, the subroutine pops the saved values of R1 and R0 back into the registers, removes the local variables from the stack frame by executing the इंस्ट्रक्शन. ठीक है, तो ये रहा आपका स्टेप के साथ फ्रेम प्रोसेसर में किस तरह से काम किया जाता है. ओके, और देख लो आप एक बार इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो. अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे माइक्रो प्रोसेसर. ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है. हम ये वैसे कई बार कर चुके हैं, फिर भी आप एक बार इस डायग्राम को फटाफट से बना लो, फिर हम डिस्कस करते हैं. ओके, बना लिया. वैसे तो ये वही डायग्राम है जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं. ठीक है, अब क्या है ये. A microprocessor is a programmable electronic chip that has computing and decision-making capabilities similar to central processing unit of a computer. ठीक है, any microprocessor based system, ये लिख लो आप एक बार. A microprocessor is a microprocessor is a programmable electronics chip. A microprocessor is a programmable electronics chip that has computing and decision making capabilities similar to central processing unit of a computer. ठीक है, इसको समझाने की जरूरत नहीं है. Any microprocessor based systems having limited number of resources are called microcomputers. ठीक है, nowadays microprocessor can be seen in almost all types of electronic devices like mobile phones, printers, washing machines and etc. अब माइक्रोप्रोसेसर क्या हुआ. माइक्रोप्रोसेसर एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है. ये क्या होती है, चिप होती है जो कि आपका सीपीयू की तरह से होती है. ठीक है, क्यों होती है, क्योंकि वो सारी कैपेबिलिटीज रखती है कि कैसे डिसीजन मेक करना है, किस तरह से किसी भी डिवाइस को यूज में लेना है, क्या कंप्यूटिंग उसके अंदर होगी. तो ये सारा उस चिप के अंदर स्टोर होता है. ठीक है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि वो एक कंप्यूटर की तरह से काम करता है. ठीक है, तो आज के टाइम में जो माइक्रो प्रोसेसर है वो सभी आजकल जितने भी मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं सभी में इसको यूज में लिया जाता है.
So microprocessors are also used in advanced applications like radars, satellites, and flights. Okay, due to rapid advancements in electronic industry and large-scale integration of devices, results in a significant cost reduction and increased application of microprocessors and their derivatives. Okay. सीपीयू मेमोरी इनपुट आउटपुट ये सारा किससे कनेक्टेड है? डेटा बस, कंट्रोल बस और एड्रेस बस से। ओके, अब सबसे पहले कुछ यहाँ पे टर्म्स हैं। सबसे पहले बिट है, अब आप लिखते चलिएगा। ओके, सबसे पहले डालिए फर्स्ट बिट, BIT बिट। अ बिट इज अ सिंगल बाइनरी डिजिट। अ बिट इज अ सिंगल बाइनरी डिजिट। नेक्स्ट इज वर्ड, ये किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, इसलिए अब मैं जल्दी जल्दी लिखवा रही हूँ। ओके, वर्ड sorry, a word refers to the basic data size. A word refers to the basic data size or bit size that can be processed by the arithmetic and logic unit of the processor. A 16-bit binary number is called a word in a 16-bit processor. Is called a word in a 16-bit processor. ठीक है, हो गया सभी का। नेक्स्ट है बस। A bus is a group of wires. A bus is a group of wires or lines that carry similar information. Next is system bus. The system bus is a group of wires or lines used for communication between the microprocessor and peripherals. लिख लिया? आगे लिखिए मेमोरी वर्ड। लिखो चलो इसमें से फटाफट।
लिख लिया? मेमोरी वर्ड एड्रेसर हो गया। नेक्स्ट इज डेटा बस। The data bus is used to transfer data between memory and processor or between I/O device and processor. ठीक है। For example, an 8-bit processor will generally have an 8-bit data bus and a 16-bit processor will have 16-bit data bus. मतलब जितने भी बिट का प्रोसेसर होगा उतने ही बिट की डेटा बस होगी। ठीक है। नेक्स्ट इज कंट्रोल बस। Control bus carry control signals which consist of signals ठीक है, which consist of signals for selection of memory or IO device from the given address. Direction of data transfer and synchronization of data transfer in case of slow devices. चलो, अब है a typical microprocessor consists of arithmetic and logical unit in association with control unit to process the instruction execution। ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर के साथ ALU भी होता है, किस लिए होता है? टू प्रोसेस द इंस्ट्रक्शन execution। Almost all the microprocessors are based on the principle of store program concept। अब now what is store program concept? इसके अंदर होता है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के अंदर, तो आप सभी को पता होगा कि व्हाट इज स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। इन स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, programs or instructions are sequentially stored in the memory locations that are to be executed। मतलब क्या हो गया? डेटा के साथ साथ प्रोग्राम्स या इंस्ट्रक्शंस भी साथ साथ स्टोर रहते हैं। ठीक है। टू डू एनी टास्क यूजिंग अ माइक्रो प्रोसेसर इट इज टू बी प्रोग्राम्ड बाय द यूजर। So the programmer must have idea about its internal resources, features and supported instructions. Each microprocessor has a set of instructions, a list which is provided by the microprocessor manufacturer. The instruction set of a microprocessor is provided in two forms, binary machine code and mnemonics। ठीक है। टू टाइप्स में माइक्रो प्रोसेसर काम करता है। इंस्ट्रक्शन सेट मतलब उसका टू टाइप्स का होता है, या तो बाइनरी मशीन कोड होगा या फिर निमोनिक्स की फॉर्म में होगा। अब ये क्या होता है? बाइनरी मशीन कोड और निमोनिक्स। निमोनिक्स क्या होगा? जैसे हमें ऐड करना है, सपोज A+B करना है, तो हम A+B नहीं लिख के उसमें लिखा जाता है ऐड A, B। ठीक है। और या फिर उसका कोई कोड गिवन हुआ होगा। Microprocessor communicates and operates in binary numbers 0 and 1। The set of instructions in the form of binary patterns is called a machine language। Microprocessor communicates and operates in binary numbers 0 and 1। The set of instructions in the form of binary patterns is called a machine language and it is difficult for us to understand। ठीक है। बाइनरी पैटर्न्स को, अब भाई 0 1 0 1 क्या लिख रहा था, ऐसा तो हमें कुछ समझ में आएगा नहीं क्योंकि वो मशीन लैंग्वेज हो गई। तो therefore the binary patterns are given abbreviated names called the mnemonics। ओके। मतलब बाइनरी पैटर्न जो थे उनको एब्रिविएटेड नेम्स दे दिया गया है, जिनको निमोनिक्स बोला गया है, जो कि क्या हो गया? विच फॉर्म्स द असेंबली लैंग्वेज।
The conversion of assembly level language into binary machine language is done by using the application called assembler. ठीक है, अब assembler कौन होता है? जो कि आपकी assembly language को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए एक बार इसमें कि the set of instructions in the form of binary patterns the set of instructions in the form of binary patterns is called machine language and it is difficult for us to understand therefore the binary patterns are given abbreviated names called mnemonics which forms the assembly language and it is difficult the conversion of assembly level language into binary machine level language is done by using an application called assembler। ठीक है, तो assembler वो एक एप्लीकेशन है या वो एक चीज है जिसके थ्रू हम असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ क्या टेक्नोलॉजी यूज में होती है? द सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज यूज्ड फॉर चिप्स आर ट्रांजिस्टर लॉजिक TTL, emitter coupled logic ECL, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ठीक है, कि आपका माइक्रो प्रोसेसर किस तरह से किन चीजों से बनता है। ठीक है, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, अब नाउ सबसे पहले हम देखते हैं बेस्ड ऑन साइज ऑफ डेटा बस की साइज के बेस पर हम जब क्लासिफिकेशन करते हैं माइक्रो प्रोसेसर का, तो फर्स्ट आप लिखिए बेस्ड ऑन साइज ऑफ डेटा बस। वन इज 4-bit माइक्रोप्रोसेसर, 4-bit माइक्रोप्रोसेसर। सेकंड 8-bit माइक्रोप्रोसेसर, 8-bit माइक्रोप्रोसेसर, 16-bit माइक्रोप्रोसेसर एंड 32-bit माइक्रोप्रोसेसर। ठीक है, दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द डेटा बस। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन के बेस पर किस तरह से इसको क्लासिफाई किया गया है। सो फर्स्ट इज जनरल पर्पस माइक्रोप्रोसेसर, देन माइक्रो कंट्रोलर एंड देन स्पेशल पर्पस प्रोसेसर। जो फर्स्ट डालो जनरल पर्पस माइक्रोप्रोसेसर में लिखेंगे यूज्ड इन जनरल कंप्यूटर सिस्टम and can be used by programmer for any application and can be used by programmer for any application example 8085 to Intel Pentium 8085 to Intel Pentium। सेकंड है माइक्रो कंट्रोलर, microprocessor with built-in memory and ports and can be programmed by any generic control application example 8051।
8051। फिर से रिपीट कर रही हूँ, माइक्रो प्रोसेसर विद बिल्ट इन मेमोरी एंड पोर्ट्स and can be programmed by generic control application, example 8051। ठीक है। नेक्स्ट इज स्पेशल पर्पस प्रोसेसर्स। स्पेशल पर्पस प्रोसेसर्स में आ जाएगा आपका डिजाइन्ड टू हैंडल स्पेशल फंक्शंस, डिजाइन्ड टू हैंडल स्पेशल फंक्शंस रिक्वायर्ड फॉर एन एप्लीकेशन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर्स, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर and application specific integrated circuits, ASICs, application specific integrated circuit chips। ठीक है। इसके बाद रिस्क ऑफ प्रोसेसर्स, रिस्क मतलब ये किसके बेस पर, बेस्ड ऑन आर्किटेक्चर। ठीक है। बेस्ड ऑन आर्किटेक्चर टू क्लासिफिकेशन है, रिस्क एंड सिस्क प्रोसेसर्स, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर प्रोसेसर एंड कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट प्रोसेसर। ठीक है। ये था इंट्रोडक्शन अबाउट माइक्रो प्रोसेसर। अब इससे पहले कोई देख लो हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है। क्या आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।